Cool. Monks, is it possible to only share the match thing to us? And a very good evening to all of you here. We are back with the round of 16, the first match day of the Crimson series that is held in collaboration with HOK Plays and Night Esports. And with that being said, we have our first game of the day, Demons of Elysium versus Ethereon Brontosaurus. And we'll be your casters. It's Baldu from my side, along with the amazingly talented Sarah. Hello and good evening, Baldu. Happy to be on the desk with you tonight. And of course, this is going to be the very first match that people will be able to witness from the Crimson Series S1. And that's quite a big deal because Honor of Kings, it launched in India pretty recently. And as far as the reports go, it is doing so well. And tonight, Team Demons Hello. Yeah, okay. And with that being said, we have the first match coming up. And as we know, the round of 16 is going to be a best of 3. So with BO3s, the thing is, it's no longer the previous elimination rounds from before. You can't really hide all your strats. Even if you take away one game, you will need that second game where you have to show something else from what you've already done so before. Because if you play the same strat the second match, there's a very high chance the other team will learn and react much better onward. So what do you think are the odds for the team so far, and how do you think they're going to react?
I guess Sarah will be joining us in just a bit. But with that Yep. being said, viewers, what do check out the. I think all of you are watching on YouTube, so check out the stream chat. Vote for your favorite team. Let us know who do you think is gonna be making it over to the next round. That is the elusive quarterfinals. So yeah, Sarah, what do you think the teams have done to prepare in this gap that we've had? Honestly speaking, the meta did change around late April and it's been a month in this game. So, definitely, they have had some time to adapt to those meta changes. Healing and tanking up all of the damage has come into play these days, and that actually makes a difference. Dahlia has increased pick rates, so has Zhang Fei with his buffs. Lady Sun received a pretty decent buff. She can poke and damage you from very far away, which means that certain ADCs like Luara and Arlie might face trouble while laning against them. But it depends on the players here because Direnji is more of a fan favorite pick these days because of his CC immunity from the second skill. While on towards the mid, Xiao Chao as well as Nuwa have been seen so many times. And of course, EXP lane, the Clash lane, it is a big deal in this game as we all know. So Lubu, Byron, we have seen those heroes being played out so many damn times. Exactly. And with the recent changes that we've had on the Ying, especially, like while Ying is not, we're not seeing Ying too much in the pro scene because of how predictable it is comparatively. Like we've seen Ying and Arc spammed a lot in peak and in ranked matches, but they kind of fall off because teams who, especially in the 5Q, they work better. But do you think with the insane amount of buff that she's got, do you think she might be, we might see a Ying game in this RO16? I think we should because the amount of mobility she has, like you mentioned, plus the crowd control, plus the amount of range she gets from her long skill, it does help to finish off those little kills where your enemy is trying to run away with 1 HP. So those things matter a lot, and in a way, it definitely will show up if Ying is picked by either of the teams. But of course, to counter that, we have several other jungle picks, which have been played by the players. The Fade is wide open in there for them to pick up. The Kaiser is a pretty decent counter to those nimble assassins. He can soak up a lot of damage with his ultimate and also deal a lot of damage by himself. Then, of course, the classic fan favorite Yanwei and Wukong come into play a number of times. So you'll see what these people decide. Sure. And we, like you mentioned, there have been quite a few stat changes in this last couple of weeks. In this 1 month, we've seen quite a few changes, a lot of buffs onto the Clash lane. We're seeing a lot more active participation with entire rotation shifting around how the Clash would be reacting. So, do you think that? I mean, we've seen it in RO3s a lot. The tempo that a team gets from the first match usually leads them to a snowball. And we've seen that tempo matters a lot in HOK from the actual micro from the minute 1 to 2 itself and all the way until the late. The team which dictates the tempo is the one that's usually taking the win. But do you think that a win in game one gives you that bonus in HOK at least? It definitely does because the momentum creator matters a lot. But the thing in HOK is if you have noticed matches between top teams, like for example, say SCT, LNR, and TX, if we take their matches as an example, somehow one team can lead the entire early phase of the game up until very late as 12 minutes. But then somehow one team fight, the ADC from the enemy snowballs, and the entire team fight just completely changes and the whole game turns over in the enemy's favor. So those kind of things happen as well, the things we love to call the upsets. So maybe we get to see some of that tonight. Yep, and yeah, with our first teams, we're going to be heading into the draft in a few short moments. What we'll have is DOE and ATR Brontosaurus. So we have, there are quite a few metas that are running around right now. I think most teams are favoring
playing around either the Dolia, where they try to go in for the resets, or support picks, like a utility kind of rotation, where the Clash is the one making their engages along with the jungler. The other lineup is where you run a Lianpo ZF kind of comp, and you pair it up with another really annoying engage fighter. So, what do you think? How these two lineups, face off against each other? Who do you think, like, apart from the obvious part of teamwork, that is the main point of the game, but on a face-to-face matchup, which comp do you think has a better performance in the early game? I mean, I feel like the Dahlia and the Lubu. This is one combo we have been seeing so many times in the matches, in this game, as well as the Xiao Chao in the mid, and then maybe Erin in towards the ADC lane. These ult resets towards the mid to late phase of the game are an absolute game changer. You snowball as well as you win out the team fights all by yourself, and that makes a hell lot of a difference. So definitely these things matter when it's a Dahlia comp, but if you are going for a ZF or a Lianpo, like you mentioned, you do want a very shred kind of ADC into your hands, as well as the mid laner should be CC heavy in a way, but also should be able to deal out a lot of continuous amount of damage. So we'll see what draft counters which draft, and of course ZF can win against the Dahlia, but the Dahlia can also win against the ZF. It all comes down to the execution. Yup, but I think the real question is, will we be seeing either of them today? Because there's a high chance, these guys will be ending up transport. Yeah. So, with that being said, we will be heading into the draft in just a few more short moments. What do you think the bans might be? As far as the meta goes, the Zhangfei should definitely be banned out. Then comes the Haya. Those are two, priority bans from almost every single team out there. The Aoyin can get taken out, as well as the Yishin or Xiao Chao. These are the picks that people love, and these are also the bans which people love to do just to spite their enemies. Yup. And yeah, I mean, I think we have teams ready. We're going to be heading into it in just a few more moments. So, viewers, do let us know what are the picks that you want your players to play. What do you think? What are your predictions on top of the bans? Are we going to be seeing a surprise pick? Are we going to be seeing a flex pick? Or are we going to be seeing a one trick, a pick that is so famous because of this one person? What do you think? It's possible, but then again, if you've studied your enemies, you definitely want to ban out on those picks, First just ban out their specific Jing or ban out their specific Drenje. Those are the usual one tricks these days. So it all works out in good favor of the teams, hopefully, whatever draft they do. And that's exactly what we would love to see. I'll go into detail. Okay. And yeah, I mean, sort of like there's like quite a few games more to go. So we up, and yeah, so there are quite a few matches left for the teams right now. Oh, and right as we speak, we will be heading into the draft phase. Absolutely so. And the draft phase will be beginning. They've got only a few seconds to ban out onto the heroes they want to take out. And the first ban itself is going to be the Ukyo. One of the very useful junglers, I would say, because despite being an assassin, he can actually sustain out a lot of damage. Plus, he's got that mobility to just keep dashing away, and I told you, the Haya is definitely going to be taken out. So maybe the next ban is the ZF or the Dahlia, trying to ban one off and then trade. Yeah, look at that.
Yep, and I think Ukyo from the side of ATR is a perfect. It makes perfect sense because you do not want to like show up your entire tempo by picking up the Ukyo first, and at the same time, the amount of pressure that Ukyo can pair up against the jungle, he does somehow manage to keep par with Pei if he has a little help. So by taking out the Ukyo, I think makes perfect sense. And like you said, you don't really need to explain the higher pick too much. Like even if you take away her damage and how fast she spams her skills, the fact that she's has the ability to take out an entire hero from a team fight itself gives her so much value in terms of ganks. So that's enough said about Haya. And I think Dolly again, like you said, there's a high chance we might not be seeing these heroes played too many times. But with that, it's gonna be the first pick onto the side of ATR. Yep, the bans from the side of DOE was the Haya and the Mai Shiranui. As for the first pick for ATR, it's going to be the Pei, while DOE, they answer it with the Wang Zhaojun and a Liang. So the Liang is actually a pretty good pick here to counter the Pei, as well as now the ADC will be coming in from the side of ATR, which is going to be the Aoyin, and like we talked about it, it is the Zhang Fei getting locked in by ATR. So that's three major picks already taken away by them. As for DOE, they need to decide, do they want to pick up on their AoE right here and avoid the heroes getting banned out, or do they want their Clash or Jungle? And looks like it will be a Musashi. Okay, so DOE right now, I mean, I kind of like the draft that they're going up with. They have Wang Zhaojun. That is, you have your AOE control. You can engage and disengage in zone out and fights. Lot of utility. At the same time, you have the world control that Liang brings to the table. That single target suppress. You kind of can stop the tempo or the juggernaut of the opposing team. It is really good to ensure a shutdown. And you have a Musashi for lifesteal, and in general, he is really good as a brawler in his impact on the jungle, and it is a really good response to the Pei because the Pei has genuinely such a high mobility that it's not easy for Frost to guarantee that lockdown on her, especially when he has transformed and he's gonna go in for the melee tiger. It is just really annoying to chase him down, and if you pair it up with the ZF, the Pei is not going to be these lock on. So you have two guaranteed lock ons with the Liang and the Musashi who can engage a duel. So it is a good early picks from both sides. And if we speak about the bans, you have the Guan Yu and the Yijing taken out from the side of DOE. What are your thoughts on the bans from our ATR? It's a bit like, Clash focus, but I would say Chicha and Fatih, it seems more of a respect ban than meta bans, because those are two heroes which are picked on towards the Clash lane, yes, but then again there are definitely better options. They have Team DOE have gone in for a Liang on towards their roam, which means they could definitely pick up something like the Lianpo on towards their Clash, or maybe the Lubu could be picking up, or even the Byron or the Fuzi could be locked in, since there's the Aoyin. You want to stop that guy from running away, but it looks like ATR will be the ones to lock in onto the Byron as well as the Xiao Chao. But look what we have here. We have got the Chano towards the ADC lane as well as an Ata towards the Clash lane. Exactly. So overall, very very interesting heavy pick comp coming in from the side of Demons of Elysium. While they have a lot of crowd control, their early damage is quite reliant on the number of bodies they can bring to the table, because there is no instant burst coming up from their lineup until like the first few minutes. So I think they, the side of ATR would have better map control in the early on stage. They have a lot of invade pressure. They can go in and out of the jungle of DOE pretty conveniently, because Liang and Frost are not going to be able to really stop the ZF effectively, nor the Pei. So with that being said, viewers, we are finally in the first game of the round of 16 of Crimson Series Season 1, and it is the match between ATR and Demons of Elysium.
Welcome to game number one, ladies and gentlemen. We will be seeing the early skirmishes towards the mid lane this time because both the roamer as well as the mid laner from both of the teams will be clearing it up. He seems to be taking away a little bit of that EXP from the mid minions and then going to his jungle, a delayed start. But it would mean that he gets his level 4 almost at the same time as Musashi because he gets the EXP from the minions anyway. And that will be a rotation towards the ADC lane to get them the Phoenix. All of them will be getting a little bit of the EXP from the Phoenix right here. And Chano gets cornered too, so he might miss out on a minion or so. But on towards the top, we can see the Ata and the Frost taking away those little creeps so that the pay cannot stack up onto his EXP. Musashi is making an early rotation towards the ADC lane. Baldu, what do you think is gonna happen? I mean, there is a high chance he's going to try to guarantee that pick, but he already has been spotted out by the Loon, gets the poke, but right now off cam, there is a very big kill onto the PF. She gets taken down, and this is what I said. You have, on paper, the draft of DOE is really good, but to execute it in the early game, you will struggle because every single lane of yours is either a stall lane or a losing lane. Chano is not going to guarantee a win against the Loon. The Loon will poke him out better. In terms of rotation in the jungle, Pei outfarms and outpaces Leonard, that is the Musashi. And finally, your roam and mid cannot really effectively, clash against their opponents because of their HP pools. So they have to hold on maybe until your first objective spawn and maybe do a better job near the Tyrant and Overlord. That's what we have got around 2 minutes onto the map for these people to zone out their enemies before the Tyrant and the Overlord begin up. But we'll have to see what they decide to do. But for now, the rotation seems to be quite focused towards that Long onto the ADC lane. Yep, they really need to address the Lung as soon as possible because the more the Lung is comfortable in lane, the tougher Chano is gonna have. He's gonna have a much tougher time because he cannot effectively guarantee a last hit, and every single trap he's putting up, the lupine trap, instantly gets spotted out by the Zhao or the ZF. So it is not a fun experience to be playing in the gold lane right now, in the farm lane for Chano. Exactly, so look at the way he's getting pressured away, but the rotation is coming in though. Wang have been, they're trying to zone them in, but they have been spotted. Musashi goes in, that's going to be a suppress coming in from the Liang. Chano gets the kill onto the ZF, but yeah, they're going to trade it off and decide to back off. That dual suppress combo, world control paired up with duel to the death, ZF with all the heals in the world was not gonna be surviving that. So he just held on to his battle spell. He knew it's not time and he's not gonna be walking out of that. He finally did get his ultimate, and in the next 30 seconds, the first tempo changing moment of the game, you're gonna have your objectives spawning up, the Tyrant and the Overlord. Do you think these teams are gonna be contesting for the Tyrant, or are they gonna just let it be for, they're each gonna trade one objective away? I think it's gonna be a trade, but they will definitely look for a pick before they go for that trade. But yeah, looks like DOE is not gonna take any chances. They're gonna rush that Tyrant to get the damage buff onto them. Zhang Fei is there though, he is there, but he uses up the ultimate. That's gonna be one stun. Byron knocks them up. Sheer's gonna get taken down. Didn't have the chance to use any of his skills. Xiao Xiao gets the Musashi meanwhile, and Team ADR come out victorious into that team fight despite DOE having the Tyrant buff. The way they paired up the force field suppression of the Biron, a beautiful knock up on 3, got the jungler, the PF, and that's 2 bodies already, and I think that is a perfect start for them. While they did lose out on the Tyrant, Pei was a little slow on the rotation to get the steal. They did get the Overlord for themselves, so they now have positive turret pressure on their opponents. There is an invade coming up. Will he get the objective? Yes, he does. Steals it away from Leonard. A beautiful CC blocking the projectile from Zhao. He will hold on to his life, but now it's 2 bodies against 3. They get a perfect suppress. Frost will put them in a world of pain, and they will go in for the follow-up. The damage is not enough. Lung gets crowd control. There is the jump in coming in from Ata. Lung forced to back off with his ultimate, and with that, they not only convert a turret on top,
beat ATR will survive with a lot of bodies. They only traded away Zhao and gained a turret and a buff out of it. But Leonard is gonna catch up immediately in the meantime. Exactly so, and they do want the turret on towards the bot side though, but as far as we can see, ATR is not going to be allowing it anytime soon. Oh no, there's a lot of damage towards the bot side. The tower is very, very low, but yeah, are they gonna focus it up? Aoyin is going in for the kill onto Chano, and he actually gets it, and the flash comes in from Liang, but he's going to get taken down by Byron, while Xiao gets Wang in the process. ATR just completely clapping back DOE. And this is the value that you get from the loom. You keep pairing up dragon orbs, you have the blood, the palm, and the downpour. It's just too much to handle. But with that being said, it was actually the wind dragon in the end that did get him that last hit. So you really cannot underestimate the damage that a lung deals. But meanwhile, on the bot side, Biron and ZF are lurking and completely occupying the space of DOE. So they're going to respond immediately. They're going in for a possible engage. There's the ultimate popped up. Zhangfei forced to use up the ultimate. Ata is there with the crowd control, doing a lot of pressure, but he is not given the follow-up that he needs. Finally, Frost will respond with a beautiful catch, taking down two. Yes, it will be a double kill due to the death used up, but it is not enough to catch down the loom. A killing spree for the marksman from the side of Ethereon Brontosaurs, and right now they are in complete control of these team fights. Beautiful, beautiful work coming in by both the teams into that fight. ATR initiated it. They got a trade. They should have backed out, but Wang, she definitely answered back so well. That's gonna be another surprise on his mid side. Pei, what a mistake! And Long will be forced to use up that ultimate as well. Team DOE trying to answer a bit as much as possible. Arthur trying to get something, but yeah, he's just going to be backing up. Looking at the goal diff, it is still in favor of Team ATR for now, but we'll have to see how it goes because things can change anytime in HOK. Yup, and Lexi, while we look at how well the star performers, that is Instantaneous on the loom and Signheart on your Pei, they're the stars of the show for the side of ATR. But I think the real star would probably for DOE would probably be the Wang Zhaojun, Ashir on that Wang Zhaojun, because the crowd control has been perfect, and we all know how difficult it is to actually catch these highly mobile heroes that BTR is running, Brontosaur is running. But look at that, once again, two bodies paired up with Arta's charge perfectly. The wall is going to catch up. There's the flicker. He tries to bring him back, but the damage is not enough. But they have done their job. They've taken out the Biron. They will secure the Tyrant, and with that, the scoreboard has changed significantly for the better for the side of Demons of Elysium. They have found the comeback that they needed. Once again, they use up, bait the ult out of the Zhangfei. Will this be an engage? They do collapse onto the Chano. The flicker, the flash is used up, and yes, ZF will get the last hit. Escapes with a sliver of HP due to the death used up, and they will take down the Pei. Once again, re-engage coming in by ZF. A rampage by Instantaneous on the loom, uses up the escape and walks away in one piece. The scoreboard is tied, so is the goal, viewers, so is every single other objective on the map. This game can go anywhere right now. Exactly what I said just a while ago, Baldo. This is one of those interesting games you really want to witness, but hey man, look at the Lungo. He's trying to deal some damage on there. He is healthy. He can go in for the fight. Byron is there for the backup, but Arta seems to be running away so fast for them to catch up. But even in terms of turrets, it's equal. The gold, it's almost equal. So it doesn't really matter right now. It all comes down to who makes the next mistake. And looks like it's going to be the Pei all over again. The mid tower in danger. Going to be marked down by the Wang as well as the Ata. But they do not have the push coming in from their marksman which they need. Which means that ATR get the chance to clap back for the enemy mid lane in the same place, but DOE, they do not want to calm down. They want T2 down there as well as take away the blue from the hands of ADR. Team has destroyed a tower. Man, it is a very good rotation coming in right now. DOE is slowly taking care of the map control. We saw that over there when Pace slightly stepped out, overstepped his bounds, a little away from the rest of his team.
the information was relayed to the Musashi instantly, and he dueled him to the death. But right now, they did try to sync up the Tyrant. They saw that, ATR will follow up. There's a beautiful force chain. World control used up onto the Biron. They dive back in. Musashi got too deep. While they do trade away for the Biron, they're going to lose 2 bodies. Make it 3. They've lost nearly everybody. It's only the Roamer and the Mage of DOE left standing, while they also lose out the Tyrant. And right as I spoke, we just discussed that DOE got the tempo back, and once again the game is neck and neck. Absolutely, and it somehow looks like no matter how hard a shield tries on that Wang, somehow Instantaneous is so good onto that Long. He positions himself so well that he just cannot be caught. That is the power of having the Long into your team, ladies and gentlemen. Play more. Don't stick around with your lady sons here and there. So, I mean, let's just say that Long means 60% of the game is yours unless you just play by. But look at that, on towards the mid side. Liang gets the ultimate, but he's gonna get interrupted. That's a lot of shield coming in onto the Byron. He escapes, and Ata will be the one to fall in this fight. That is the problem. DOE cannot afford. They do not have the amount of frontline that ATR can field for themselves. The ZF, while the Ata is tanky, he cannot beat the combined value that Biron and a ZF bring. The amount of shield value itself is just too much. And Liang, on the other hand, cannot afford to get crowd controlled in the middle of casting his ultimate. So, with that being said, the scoreboard's still pretty even. While map control is in favor of DOE, they have more objectives in terms of turrets. But while you have your actual goal difference is in favor of your ATR. So the score is neck and neck. Your Pei will be picking up a very sneaky turret on the top side, uses up the transformation to get away. There might be a possible engage. FFS used up by the Biron. They do bait out the invincibility on the equipment of the PF. So the Princess Frost now is a lot more fragile in these team fights. She still has the flash. World control used up. ZF perfectly knocked back 3 people away, and they will pick up that first tier 3 tower in the mid lane, and it was high time they got it. I mean, it was quite a long time. It's standing for 13 minutes. You needed that pressure. Exactly so. I mean, 13 minutes means your ADCs are nearly close to being farmed up. Like 16 is where they get all their items. So this means that the Long as well as the Chano are pretty strong here. So it all comes down to who positions them better, and Instantaneous somehow has been able to do it better for the entire game so far. Yup, and right now, once again, they find themselves on the back foot. Despite having the gold, the lack of turrets is making it very difficult for them to seek info, because they know that they cannot let Zhangfei stray too far, because DOE does have the tools to shred away a ZF, or at least bait out a significant portion of his skills with just the world control and the frost. That it says is going to chip down ZF quite a lot. So with that being said, on the top side, we see a possible rotation coming up. They might be looking for a play, but no, nothing out of it just yet. The Overlord Enhanced is finally up. They are trying to siege down the mid turret, and they will be successful in doing so. They also put up a lot of pressure on the top side. DOE right now finding themselves on the back foot. Exactly, they're getting cornered so much because of that ZF pressure, because even if Liang ults him down, there's obviously other knockouts present on the side of ATR to interrupt his ultimate. And I think that is why Dongwang just does a better job of being the suppress user in this game. Meanwhile, they are trading off the objectives though. DOE seems a bit too late, and ATR is already here for the backup. Can Musashi get the smite? He actually gets it, but onto the backside, it's a complete massacre. Chano is getting marked down. He takes down the Musashi away from the fight, and he actually gets the kill. Ata just CCs them away from his teammate and runs away back to safety. They take the Tyrant, but they lose one, and all in all, ATR get the better trade in this fight.
Blue team. This is something we're seeing time and time again. Despite DOE having the better rotation at the start or the better initiation of a fight, we still somehow see ATR coming out on top each time, and it's simply because of the re-engage value that their comp brings for them. The ZF ult is not a one-way utility like the World Control. It's gonna continue. It's gonna be long-lasting. And right as we spoke, the Overlords will be marching up top. They do shred down the mid and the top inhibitors. They will be looking for a fight. Princess Frost does not have her ultimate right now. They're trying to poke out Arta. Will they succeed in taking up the pick? They force out a flash from him. They're sent back to base to heal up. The next two Overlords are marching down. Princess Frost absolutely shredded. Okay. The base is being sieged, and with that, for match one, game one will belong to ATR Brontosaurs as they will take down DOE and secure match point. Absolutely beautiful. Already taken away that lead. It was a back and forth game, but that singular long pick onto the ADC lane, instantaneous 96. Remember his names is going a long way if he plays like this, because he was absolutely invincible into this match despite Ashir, Leonard, Ata as well as Liang and everybody having so much of crowd control to catch an ADC. They weren't able to do it onto the long. Pei did an amazing job of rotating. He did get caught off a few times, but it was worth the trade which his team made. Byron and Changfei, of course, being the frontline menace, just zoning people away from the side of DOE. They weren't able to convert the crowd control they had into a proper team fight, and that is where Team ATR just came out on top and got this victory for themselves. Exactly. They would. I mean, I think DOE would have had a much better performance. DOE might have had a better performance if they did continue looking for the pickoffs like they did, but they kind of, locked in on only trying to catch out the loom, trying to catch out instantaneous, and they were not successful in doing so. And rather than, learning from that, initial rotation we saw in the early game, because we saw how protective ATR was of their gold lane or the farm lane. They did not give, DOE any space to really go in and get that catch. So they could have probably gone in for the mage. They could have gone for the Biron because they were pretty much rotating quite free. They did the same and caught off Pei. But if they continued that tempo, maybe we might be seeing a different result. That is one, but I think, Baldo, that's going to be it for game one, and we'll take a little bit of a break before we come down with game two. Exactly.
Nuane foda kudus nganga ay kauda kauda asyute kauda nganga. Aba wasidaya mama ay nganga tai watiskinga. Nuane foda kudus nganga ay kauda kauda asyute kauda nganga. Aba wasidaya mama ay nganga tai watiskinga.
क्या बोलती पब्लिक, इट्स योर बॉय राइन हार्ट फ्रॉम नवाबों के शहर लखनऊ से। स्वागत है आप लोगों का 4K मंक्स पे, जहां पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्रिम्सन सीरीज सीजन 1। ऑलरेडी 64 टीम थी दोस्तों, जहां पे अब 16 टीम्स बची हैं और पहला मैच हमने देखा ATR वर्सेस DOE। मेरे साथ में है बलदूदू, जो हमें बताएंगे कि पहला मैच जीता कौन और आगे क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है। And welcome back, guys. This is the next match that we've had. It's still match 1, but pehla point to abhi it has been ATR which has taken up the first point. Demons of Elysium pass aaye the, but it was not enough to secure that win. So abhi match point is with ATR, and the real question is, kya ATR clean sweep kar payegi, ya DOE will give us a comeback?
थोड़ा बताइए बलदूदू इस मैच के बारे में, आपके हिसाब से कौन सा जंगलर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था? क्या पे अच्छा खेल रहा था या फिर मुसाशी ज्यादा अच्छा खेल रहा था? क्योंकि मैं उतने अच्छे से मैच को देख नहीं पाया, आपने कास्ट करिए, आप जरा थोड़ा एलाबरेट करिए किस तरीके से पहला मैच गया था। वेल एक ही चीज़ बोलना है कि प्रॉब्लम क्या होता है, जंगलर का पूरा टेम्पो के बेसिस पे रहता है, और टेम्पो का नाम पूरा तुम्हारा रोम और मिड विल बी सेट डिसाइडिंग कि टेम्पो कौन डिसाइड मतलब सेट करता है, एंड द टेम्पो इज फर्मली इन कंट्रोल ऑफ ज़ांगफे एंड एटीआर का जंगलर, इसलिए डिस्पाइट 2-3 बार पिक ऑफ हुआ 1v1s में अगेंस्ट मुसाशी, इवन द मुसाशी वन द 1v1s, द एक्चुअल जंगलिंग ऑब्जेक्टिव तो पे ही उठा पाया बिकॉज ऑफ हिज टीम। और मैंने देखा कि प्रिंसेस फ्रॉस्ट के बहुत अच्छे S2 और अल्टी लग रहे थे, उसके बारे में आपको क्या कहना? कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद गेम पलट जाएगा, बट एटीआर कम बैक कर ले जाती है। I mean, वो it was a very well deserved MVP for Frost. I mean, बहुत effort डाली थी. It was perfect crowd control. Like I think मैं बोला भी था कि previous game का it is not easy to catch any of these heroes जो ये ATR ने draft किया था. ZF का रहता है, बिरॉन बहुत टैंकी रहता है, शाओ पे फ्लिक्स है, सब पे फ्लैश है. उसके बावजूद द फैक्ट दैट 90% ऑफ द क्राउड कंट्रोल सिर्फ फ्रॉस्ट से आया है, इज नॉट इजी. सो मे बी इफ फ्रॉस्ट का टाइमिंग थोड़ा और अच्छा रहता, फ्रॉस्ट का सिंक विथ हर टीममेट्स, क्योंकि चानो और मुसाशी थे ही नहीं. बाय द टाइम चानो का डैमेज आने लगा तब तक गेम खत्म हो गया था. तो वो ये थोड़ा अर्ली गेम पे फोकस थोड़ा और स्प्रेड आउट होता तो मे बी स्कोरबोर्ड बहुत अलग रहता. अच्छा, फिलहाल मैं जब मैच देख रहा था तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि शायद ETR कहीं ना कहीं इसको लूज करने वाली है. अगर मैं ड्राफ्टिंग की बात करता तो मुझे पर्सनली पसंद आया था ETR का ड्राफ्ट, बट जब अर्ली गेम आता है, पेज आता है इनिशिएट करने के लिए और मुसाशी उसे किल कर देता है, तो गेम का टेम्पो थोड़ा चेंज होने लगता है और फिर प्रिंसेस फ्रॉस्ट को भी किल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. फिर क्या ऐसी सडन चीज आती है, क्या रोटेशन आने लग जाता है कि ETR कम बैक करना स्टार्ट कर देती है और एक तरफा डोमिनेट कर देती है गेम को? वेल पहला चीज तो सीधा है कि ETR शुरू का टेम्पो ETR का अच्छा था, बट DOE का अच्छा गैंग मिल गया था अर्ली गेम पे बिकॉज ऑफ द लियांग. वर्ल्ड कंट्रोल बहुत सही लगाया था फ्रॉस्ट के साथ, पैर अप होके उनका इन्वेड वेंट इन द रॉन्ग वे, और फिर DOE पूरा इन्वेड के साथ रिवर्स इन्वेड भी कर लिए थे. बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो टेम्पो होल्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज DOE के पास पूरा एंगेज कॉम्प है. मुसाशी, आटा, फ्रॉस्ट, जाओजुन और यरलियांग सबका एक ही सिंगल इनिशिएट स्किल है, एंड डिसएंगेज आटा को छोड़ के, आटा और चानो छोड़ के, मुसाशी इज आल्सो नॉट रियली गुड एट डिसएंगेजिंग. बट the case is opposite for every single member of ATR. ZF has 2 options to come in and come out. Pei का है, Loom का is immune है, Zhao has a really good flash और slow, और जितना Zhao को करोगे उतना और तुम पे डैमेज लगेगा. एंड बिरॉन इन जनरल हमको पता ही है, बिरॉन को तुम ज्यादा एंगेज करोगे तो रिवर्स वो एक स्लो करके काउंटर एंगेज कर देता है. तो वही इशू हो रहा था हर फाइट पे. ATR शुरू का फाइट हार रहा है, ZF मर रहा है या फिर बिरॉन इज गोइंग डाउन, बट लास्ट में दे आर गेटिंग अ गुड ट्रेड. इनके 4 गिर रहे हैं तो उनके सिर्फ 2 ही गिर रहे हैं, तो ATR स्लोली दे वन दिस गेम. जब आप मिड से लेट गेम जाने लग जाते हो ना, तो आपके आइटम्स बन जाते हैं और फिर आप कहीं ना कहीं प्रिंसेस फ्रॉस्ट का जो आप बार बार AOE आपके ऊपर आ रहा है, आप उसे सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हो. तो आई थिंक वही कहीं ना कहीं उन्हें एडवांटेज भी दे रहा था कि अंदर आप जा करके अच्छे से इनिशिएट कर रहे हो, लॉक कर रहे हो जो स्पेसिफिक एनिमीज को आपको लॉक करना है. और लूम जिसका मेनली डैमेज आता है मिड टू लेट गेम में, वो उतने आइटम्स को नहीं बना पाया था. बट स्टिल दोनों ही टीम्स ने अच्छा खेला. बट अभी आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटेजीज चेंज हो सकती दोनों टीम में? क्या सेम पिक जाएंगे या फिर कुछ और सोचने की कोशिश करेंगे? I mean, from the side of ATR, I think picks बहुत straight forward ही रहेंगे. वो last game भी they took out Okio, उनको पे फोकस करना था. I think इस बार उनको पे मिलने तो नहीं वाला, इधर दूसरा साइड स्टील कर लेगा वो पे को या फिर खुद उठा लेंगे. So अगर एक से याद उनका बैंस तो I think पहले पिक्स में तो उन्होंने आई थिंक शायद ये ग्लोबल बैन पिक भी है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, आप मुझे बताइएगा. शायद ये ग्लोबल बैन पिक भी है. और आप उनका मतलब एक तरीके से देखिए कितना ऑरा है कि सबसे पहले उन्होंने पे उठाया, वो भी एज अ जंगलर. कितने चांसेस होते हैं आपके काउंटर होने के? एग्जैक्टली फर्स्ट पिक पे उठाने के बाद इंस्टेंटली मुसाशी का रिस्पॉन्स आया था. उसके बावजूद
डिस्पाइट गेटिंग पिक्ड ऑफ ओनली थ्राइस, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंगल से हुआ था जंगल पे विजन के बिना. द वैल्यू ऑफ पे इज जस्ट टू गुड टू इग्नोर, क्योंकि वो ही वॉज लेवल 4. मुसाशी का भी एक बफ खाया था, तब तक पे ऑलरेडी अपना पूरा जंगल खाली कर दिया था, क्योंकि दैट इज द फार्म स्पीड वैल्यू दैट यू गेट फ्रॉम हैविंग अ पे इन योर टीम. एंड सेकंड थिंग इज बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए फर्स्ट पिक जंगल करने के लिए. कोई भी हीरो, बट पे इज इवन इट्स अपिंग द स्टेक्स अ लॉट. दोस्तों मैं आपको चैट सेक्शन में बता दूं कि अभी एटीआर टीम ऑलरेडी आ चुकी है. हम वेट कर रहे हैं डीओई का. जैसे ही वो टीम आ जाती है हम स्टार्ट कर देंगे. तो थोड़ा बहुत यापिंग कर रहे हैं. तुम्हें कुछ सवाल हो तुम भी पूछ सकते हो चैट में. एंड मैं बता दूं कि ये क्रिम्सन सीरीज सीजन 1 है, जिसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं 4K मंक्स एंड नाइट वुल्स स्पोर्ट्स. या बहुत देर यापिंग करनी पड़ेगी भाई. कितना क्वेश्चन पूछो. ओके गाइस, एक छोटी सी न्यूज आपको और बतानी थी. जो हम इंतजार कर रहे थे उसका फाइनली जवाब हमें मिल चुका है. डीओई वॉक ओवर कर चुकी है, जिसकी वजह से एटीआर को बाय डिफॉल्ट पॉइंट मिल जाएगा. पहला मैच भी ऑलरेडी एटीआर जीत गई थी और सेकंड पॉइंट भी उनके खाते में आ चुका है. तो ये BO3 की सीरीज एटीआर जीतती है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एटीआर एंड बेस्ट ऑफ लक टू डीमंस ऑफ एलाइसम नेक्स्ट मैच के लिए या फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए. छोटी सी न्यूज आपको और बतानी थी. जो हम इंतजार कर रहे थे उसका फाइनली जवाब What's up, people? How you guys? Welcome. Okay, guys, how you guys doing? Let's time talk to chat. How you guys doing? Welcome. Thank you so much for joining. We are here in the
Crimson Series S1, and I'm taking care of the background production aspect of things. Obviously, you have the casters as well. Just came to know about the news, man. DOE just gave a walkover, man. How the hell did that happen? Oh my god. So, they've given a walkover and we are waiting for the next team. Actually, we had scheduled the next team for at 10 o'clock. But now that we are calling them a little earlier. So, let's see. They might be here by 9:30 or so. And we have the casters waiting. We have the entire team waiting for the next team to come in. How are you guys? Do ask any questions. Please be polite in the chat. You might get a ban. You might get a timeout for a few seconds, but don't go anywhere. It's just going to be a timeout. Just be kind and be nice to your casters and everyone who's helping in the production and helping out with everything that's going on. Oh my god, ATR played very well there, but I thought it was a sure shot DOE win, bro. मेरे को तो लगा DOE जीतेगी, but ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होने को मिला. देखते हैं. Sparky Gaming, welcome. Next match is going to be in by these two guys. I'll let you know. Next match है इन दोनों के बीच में अपना Okay, match number 32 is between Team International and R&T खेलेगी next match. और मेरे को बैठ के पूरा काम करना पड़ेगा इसके लिए. भाई साहब इतना काम देते हैं ना लोग, बट करना पड़ता है ना, क्या करें. और गाइस, हाउ इज इट गोइंग? बहुत दिनों के बाद हमने HOK वाली स्ट्रीम लगाई है, तो क्या चल रहा है? टॉस हो रहा है, अभी टॉस की वेट कर रहे हैं हम लोग, और लगता है टॉस जीती है R&T ने टॉस जीता है, एंड दे चूज ब्लू या रेड. R&T. तो ये जो सेशन था अभी, बेसिकली जो शेड्यूल इवेंट है, ये हमारा सेकंड सीरीज का सेशन चल रहा है. सेकंड सीरीज मतलब सेकंड राउंड का सीरीज का चल रहा है यहाँ पर सीन. ऑलरेडी फर्स्ट BO में ऑलरेडी हमारे 40 से ऊपर टीम्स आई थी. हमने सारा छांट के अभी 16 टीम्स आई हैं हमारी. तो वो 16 टीम्स अभी कम्पीट कर रही है कप के लिए और सीरीज के लिए. तो देखते हैं क्या होता है ये सीरीज के अंदर. एंड आई विल बी राइट बैक. बहुत काम है जो खत्म करना है. दैट वन गाय, मैं इधर हूँ. ये R&T कौन है? नहीं पता R&T कौन है. ये नई टीम है, दूसरी टीम है. R&T का नाम अलग है. यो स्नाइडॉक्स, कैसे हो ब्रो? वी लॉस्ट टू ATR ओनली. अच्छा, यू गाइस लॉस्ट टू ATR ओनली. व्हेन आर द फाइनल्स? फाइनल्स विल बी मच लेटर. प्लेयर इशू की वजह से उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे खेलने के लिए, बट दे डिड अ DQ. आई मीन दे वांटेड टू गिव इट आउट लाइक. तो थोड़ा सा वो सीन था. Anyway, so let me just quickly finish my work and then come back. Hold on.
Hey guys, what's up? What's up? What's up? Sorry. What's up? What's up? How you guys doing? RNT is equal to Senpai? No, it's not Senpai Jukes. It is a different team. अभी आ रहा है. And DjMonks, thank you, Kuchi. Ooh, it's a nice name, very cute name. Kuchi. Thank you so much. And let's go for next match. Yes, we are trying to go for next match. We're just waiting. We've just what happened is we were expecting a BO3 session, and we've given half an hour each for every match to do the management at the back end. But apparently, because the BO they gave a DQ, they gave a walkover. So we've got enough time for the next team. So we've just asked the next team, can they get ready to come and play with us? We had allotted the next game to be at 10 o'clock, but apparently that is not happening. And these guys, they've been informed. Let's see if they respond, and we can have the match a little bit early. So please wait a while, and please do hang on. And जाना नहीं कहीं पे, बात करो मेरे साथ. Yo Snydox, what's up Sparky, what's up? We lost to ATR only. Oh my god, you are a tough person to crack. So you lost to a good team. That means great. When are the finals? The finals will be somewhere in the next 2 or 3 days. Hopefully we will see the finals. A good finals between the two teams. If I'm not wrong, DOE was Bangladesh versus ATR. ATR is an Indian team only, I think, if I'm not wrong, or it could be something else. I will need to check the thing again. Indo team, yes, it's an Indo team. So let me also tell you the rules, guys. What we had done was, because we wanted the international players to play this tournament with us, they were having innovations. They were either wanted to play with their own team, with their entire full team, or they wanted to play no other way. And we sort of convinced these players to join with one Indian at least, and hence we had the 4:1 rule. And using that, we've got some international teams playing in the tournament, and we had seen the entire draft 1 finished off with that in that process. And now this entire current situation is going to be all about the international teams as well as the Indian teams. So now we have compulsory Indian 1 in their lobby
as at any given point of time in the game, you will have one Indian playing with them. It also is like a test of time for the Indians to come up in their gameplay, see how an international event feels like. कैसे तुमको लगता है इंटरनेशनल के साथ खेलना अच्छा लगता है क्या? टीम्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगी, थोड़ा सा सिनर्जी बिठाएंगी, और इंडियंस को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसा खेला जाता है और कैसे देखा जाता है, कैसे कॉल दिया जाता है, वो सब सीखने के लिए. तो वो एक बेनिफिट की वजह से हमने सोचा कि इंडियंस को ये बेनिफिट दें और इंडियंस को कोशिश करें ऐसे रोल में लाने के लिए भी. तो इस प्रोसेस से सोच के हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया था 4:1, ताकि एटलीस्ट कोई इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी हो और इंडियंस को भी मौका मिले सीखने के लिए. उसके अलावा हमारे पास एक और स्पेशल रूल था जो हमने बोला था 4:3. तो 4N3O 4N03 बोल के नाम लिखा था हमने. और उसका मतलब क्या था? 4 न्यू 3 ओल्ड. हाँ, तो 3-2 लिखा था, सॉरी. हाँ, 3N02 सॉरी, 3N02 करा था हमने. 3 न्यू 2 ओल्ड मतलब जो सारे हमारे जो प्रीवियस टूर्नामेंट्स हुए थे, जो एशियन कप हुआ था और जो ये रिसेंटली हमारा किंग्स अराइज टूर का होता, ये 2 टूर्नामेंट्स को लेके नए प्लेयर्स बहुत खेलना चाहते थे और इन लोग को वापस इसी टूर्नामेंट में बैठाना और खेलना उनके साथ, उसका थोड़ा सा इशू था. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी ट्राई टू डू was we tried to only push the so-called teams by having 3 new players at any given point of time. Why is the stream lapsing so much? No reason for the stream to lapse. I get it now. Hold on, guys. अब शायद स्ट्रीम लैप्स नहीं होगा. Be good to go. Yeah, I think it's not going to lapse anymore. So we had 3 new players compulsory in that team and 2 old players that they have to keep at any given point of time for the to participate. For all the players who were top 8 in those 2 tournaments. That's what we did. That's why we had that role and the scene. Just stay tuned, guys. We will be right back with the new lobby and the new teams. Stay tuned.
Wait, lobby ID. Please give lobby ID. And you have to share a screen. You have to share a screen. 840. Yeah, शेयर कर दो स्क्रीन अब वापस. रिजॉइन करो ना आप एक बारी. अरे ठीक है. बलदू तो स्टार्ट कर ले. All right. And welcome back, folks. We are finally back after this break because of the walkover in the match 1. This is match 2 of the Crimson series, organized by DjMonks Play and team, and we are in the second game of the first match day, and it is between none other than your Team International versus RNT. So with that being said, we're going to be heading into the draft in just a few moments. But before that, I would like to introduce my fellow caster Reinhardt, who's going to be casting with us today. या हेलो गाइस, हेलो, थैंक यू बलदूदू. एंड ये सारे ही मैचेस BO3 होने वाले हैं. इसके बाद में हमें कोई लूजिंग ब्रैकेट देखने को नहीं मिलेगा. जो भी टीम यहाँ से डिस्क्वालीफाई होती है या गेम हार जाती है, वो सीधा ब्रैकेट से बाहर जाएगी. अभी थोड़ा सा मैं तुम लोग को बता देता हूँ RNT और INT के बारे में. INT ऑलरेडी टीम नोवा और टीलू जैसी गैंग टीम को डिफीट करके यहाँ टॉप 16 में अपनी जगह बनाई है. वहीं मैं RNT की बात करूं तो उसने भी टीम A7 जैसी टीम को डिफीट करके टॉप 16 में आई है. आज दोनों ही टीम का मैच है. BO3 का आज हमें मैच देखने को मिलेगा. किसको लगता है बलदूदू, तुम्हें कौन सी टीम तुम्हें लगता है कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है? देखो, अब नाम का दोनों के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, RNT और इंटरनेशनल दोनों. ये दोनों ही नाम काफी सिमिलर नहीं लग रहे? RNT कहीं से सुना लग रहा है और INT किसी और मोबा से सुना लग रहा है कि नहीं? वही तो, बहुत बड़े नाम है. तो अभी एज कास्टर्स तो मैं तो कुछ बोलने नहीं वाला हूँ. टीम्स का वो बस परफॉर्मेंस हमारे मुंह बंद है. बट विद दैट बीइंग सेड, बेस्ट ऑफ 3 है, तो कोई भी टीम जा सकता है अगले राउंड. फिलहाल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो शायद INT 2 टीम्स को डिफीट करके आई है, तो मे बी शायद उनके पास में थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस हो किस तरीके की गेम प्ले और किस तरीके की स्ट्रेटजीज लगने वाली है. बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि INT के पास भी अच्छा रोस्टर हो सकता है. अभी मैं ऐसे ही नॉर्मली चेक कर रहा था कि रैंकिंग वगैरह क्या है, तो दोनों ही टीम्स के स्टार वगैरह काफी अच्छे हैं. आप भी एक बार चेक करके देखिए बलदूदू. बलदूदू आप म्यूटेड हो. माय बैड. मुझको लगा बात कर रहा था. बट वही है, अब देखना पड़ेगा. कहाँ गेम कहीं भी जा सकता है. बट वही है, आपका क्या लग रहा है कि बैन्स पहले गेम जैसे रहेंगे, वही डोलिया ZF वाले बैन्स, वही प्रायोपिक, या कुछ नया ड्राफ्ट देखने वाले हम?
यार इस मोमेंट पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि टीम्स ना कभी कभी एक स्ट्रेटेजी बना के आती है, उनके दिमाग में पिक्स होते हैं कि उन्हें यही स्पेसिफिक पिक लेने हैं और क्या स्पेसिफिक बैन्स उन्हें उनके अकॉर्डिंग करने हैं, और ज्यादातर अर्ली गेम पे मुझे यही स्ट्रेटेजीज देखने को मिलती हैं। बट जैसा आप बता रहे हो कि डोलिया पिक ये बहुत ज्यादा बैन होता है, आउइन पिक ये बहुत ज्यादा बैन होता है, बट हाँ मुझे ये पक्का उम्मीद है कि शायद दोनों ही टीम्स जंगल पिक पहले नहीं करेंगी। हाँ, ये दिस इज अ गुड प्रेडिक्शन, मतलब इसका होने का बहुत हाई चांस तो है, बट वो ये देखना पड़ेगा। 1-2-3 मिनट में हम ड्राफ्ट में तो घुसने ही वाले हैं। विद दैट बीइंग सेड, देखना पड़ेगा। आई थिंक फर्स्ट पिक विल बी, एज फार एज आई नो, आई थिंक मॉन्क्स भाई ने बोला था फर्स्ट पिक इज विद आरएनटी, राइट? शायद वो टॉस जीते हैं तो ब्लू साइड आरएनटी होने वाली है और रेड साइड आई थिंक आईएनटी रहेगी। नाइस। यहाँ पे भी मुझे कुछ कॉमन नेम दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी हम दूसरे मोबाइल्स वगैरह में भी देखते हैं, जैसे जिंक्स को देख सकते हैं, नोवेल, इस टाइप के हमें हीरोज दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इनकी प्रोफाइल वगैरह भी चेक करता हूँ तो लग रहा है कि ये खिलाड़ी टूर्नामेंट वगैरह की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, मतलब शौक है और साथ ही साथ में एक जुनून है कि हमें भी टूर्नामेंट खेलना है। और एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट भाई, बिकॉज नॉट, वो एक चीज होता है कि वो एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए एज अ टू गो एंड एक्चुअली प्ले ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिवली। ई स्पोर्ट्स तो सब खेलते हैं, बट कॉम्पिटिटिव खेलने के लिए पैशन के साथ वो एक प्रोफेशनलिज्म रहना चाहिए। इसलिए द टीम्स दैट स्क्रिम, द टीम्स दैट प्रैक्टिस, द टीम्स दैट पुट इन द टाइम एंड एफर्ट, और that is the teams that you keep seeing reaching these rounds, because the real reason you have some teams always topping at round of 16, top 8, top 32, despite having a very high quality team or good quality players, is that वो effort ही नहीं डाले हैं। तो कोई separation रहता है। The reason the top 2, top 4 teams are at that stage is क्योंकि वो इतना घंटा घिस के खेले। बिल्कुल बिल्कुल। Do you think we'll find a team, a new gem like that would emerge from Crimson series? हाँ, देखने को मिल सकती है। अभी अगर मैं आरएनटी की बात करूँ ना तो मुझे वैसा वाइब भी आ रहा है कि मेरे जानने में एक लड़का है आरएनटी से जिसको बोलते हैं हम कॉल मी सेनपाई। उसकी आंखों में भी एक जुनून था, एक आग थी, और आज वो आग ना आरएनटीएस की जर्सी में चल रही है। तो ये पैशन, ये तुम्हारा जो अंदर का जुनून है, ये तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, और एचओके ही है जो तुम्हें वो प्लेटफॉर्म देता है। Exactly. So with that being said, draft चालू कब होगा pick? But yes, I think all the viewers are just as excited for the match to begin. Match 2, we're gonna start off in just a few more moments. Viewers, be a little patient with us. You have to listen to us for a lot longer. Especially Ryan and I, we're gonna be here the whole night. So with that being said, match 2 is coming up. Bans तो हमने तो बात कर लिया है bands का। चलो प्रिडिक्शन करते हैं फिर इसी बात पे। चलो प्रिडिक्शन कर लेते हैं, बैन्स क्या हो सकते हैं। टीम ब्लू की साइड से आप करिए, टीम रेड की साइड से मैं करता हूँ। अभी ब्लू का फर्स्ट पिक है तो मोस्ट लाइकली दे विल बी टेकिंग आउट ये उकियो और ZF या गुआनियो। गॉन यू, ओके, नाइस पिक। वैसे जल्दी तो मुझे नहीं देखने को मिलता है, बट हो सकता है कि हाँ गॉन यू भी देखने को मिल जाए। बट आई थिंक आउइन ज्यादातर टूर्नामेंट के मैचेस में डेफिनेटली बैन देखने को मिलता है, एंड शाओक्याओ भी एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पिक है, क्योंकि आपका S2 और अल्ट इतना अच्छा कनेक्ट होता है टीम फाइट के अंदर कि आप मजबूर हो जाते हो बैक करने के लिए। तो शाओक्याओ भी मुझे देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हाया किसी भी इनिशिएटर या किसी भी टैंक को ना अपनी जोन में ले जा सकते हैं। और फाइनली ड्राफ्ट स्टार्ट हो चुका है। ब्लू टीम की तरफ से आ रहा है सबसे पहला बैन। बलदूदू ने गेस किए थे 3 नाम, देखते हैं वो होते हैं या नहीं। देखो अब नहीं हुए तो मैं इसलिए अच्छा है मैं कास्टर हूँ और कोच नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि अगर प्रेडिक्शन हुआ नहीं। बट विद दैट बीइंग सेड, वी फाइनली आर इन द बैन फेज, एंड क्योंकि कास्टर भी कभी कोच था। पहला बैन इज एक्चुअली द धर्मा इन द क्लैश पेन। ओके, अपनी बैकलाइन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी शायद टीम ब्लू। और डोलिया बैन, ये भी गेस सही था हमारा कि डोलिया हमें बैन देखने को मिल सकता है। बट जिस तरीके से अभी टीम ब्लू जा रही है, डेफिनेटली ये कुछ स्कुशी टारगेट को लेना चाहते हैं, कुछ स्कुशी हीरोज जाएंगे ताकि वो अपने बैकलाइन को प्रोटेक्ट कर सकें धर्मा के अगेंस्ट पे। बलदूदू, मुझे लग रहा है आप खो जा रहे हो या फिर आपका दोबारा से म्यूट हो चुका है, और मुझे अर्ली बैन देखने को मिली है। सेकंड बैन दोबारा आ चुका है जिंक्स के हाथों में। 0/2 so far on my side. Ryan is going 1 for 1.
But yeah, Arlie and Dharma, two picks you do not see too often, but very, very strong in their respective lanes, complete lane bullies. So both यार of ये them हो get ही taken ना out. उठाए, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये हो ही ना उठाए, ठीक है। हो सकता है टीम ब्लू हो ही उठा सकती है, पर रेड टीम के फैंस देखो बलदूदू, पे देखने को मिला है, डॉलिया देखने को मिली और आओ इन फर्स्ट पिक कर लिया है। सेफेस्ट एमएम अगर हम किसी को बोल सकते हैं तो वो आओ इन है आपके टाइम, आज के टाइम पे। डेफिनेटली हमने प्रीवियस गेम में भी परफॉर्मेंस देखा था, इंस्टेंटेनियस 96। वो पूरा सीरीज में हुआ एक मैच, बट वो एक मैच का एमवीपी इट वाज डेफिनेटली लूंग। लापू लापू पिक हो चुका है, हाया भी पिक हो चुकी है, फिर से हम आ चुके हैं टीम ब्लू की तरफ में, जहां पे मुझे मुशाशी लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रंटेरा इनका नाम है, बट उन्होंने स्वाइप कर दिया सीधे जैंगफे पे। ओह, इंटरेस्टिंग। किसका नाम पूछ रहे मोंग्स भाई? आओइन। आउइन, मैं आउइन बोला, आउइन नाम है उसका। So the Aoyin picked up, followed by the ZF once again and the Biron. It is almost the same draft from that ATR ने उठाया था गेम 1 पे उनका। अभी तक तीनों पिक सेम है, अब बस एक पे बचा है, पर वो तो बैन हो गया है, तो एक जाओ बची है। On the other side, मुशाशी, ये इनको महंगा पड़ गया। इन्होंने पहले मुशाशी दिखा करके जो स्वाइप किया था ना, टीम ने रिकॉग्नाइज कर दिया, बेटा नहीं लेने देंगे मुशाशी तुमको। रेड टीम ने उसको इंस्टा लॉक बैन कर दिया है। अब फिर से चलते हैं, पनिश करेगी? नहीं कर रही है। यहाँ पे मुझे दो एमएम बैन देखने को मिले हैं। लेडीसन बैन है, अर्ली बैन है। कहीं ना कहीं लग रहा है मेरे को शायद कोई ना कोई स्क्विशी मेज जाएंगे जिसके पास में मोबिलिटी कम हो। जिस तरीके का इनका टीम कॉम जा रहा है ना, टैंकी बायरन उठा रखा है, जैंग पे उठा रखा है, आओ इनको लेके रखा हुआ है, तो शायद लेडीजन के या प्रिंसेस फ्रॉस्ट के भी मुझे लग रहा है कि चांसेस हो सकते हैं। तो एंड अगुडो बैन बलदूदू। द यिंग इज अ रियली गुड पिक देखे तो, बट द प्रॉब्लम क्या होता है यिंग और आर के दोनों बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, स्पेशली इन नहीं यार, अभी तो क्या बफ होके रखी हुई है और कितना गंदा सीसी दे रही है। is absolutely really strong. Ying in a 1v1 is the most annoying brawl hero to play against. But issue क्या होता है, Ying का rotation and sync combo is very easy to read. उसका engage एक है, उसका ult which is also a disengage. And उसको damage maximize करना है तो you have to cancel out disengage. And कोई इश्यू आता है, इधर लापू के साथ यिंग का कॉम्बो एग्जैक्ट बैठना पड़ेगा एंड हाया विल हैव टू टेक आउट द ज़ांगफे। अगर ZF फाइट पे रहेगा तो वो पूरा डिसरप्ट कर देगा अपना अल्ट लगा के यिंग को। या बट एक अच्छा चांस है ना, हाया या तो बायरन को अपने साथ ले जा सकती है या जैंगफे को ले जा सकती है, वो किसी भी फ्रंटलाइनर को पिक कर सकती है, ये अच्छी चॉइस है। बट आप देखिए ऊक्यो तो अच्छी बाना दिया है और साथ में नोवा और शाओक्याओ की तरफ में इनका स्विचिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है ब्लू टीम्स का। वही तो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट श्योर या जाओ, दैट इज ऑलमोस्ट the same pick for pick except for the Ukyo which was banned out by ATR and with Ukyo उनको बहुत अच्छा जंगल प्रेशर मिलेगा अर्ली गेम में। they have help from the ZF, पूरा जोन रखेगा, he won't let Ying invade that easily because Ying is not that strong until she gets her power first item and by that time until then Zhangfei अच्छे से डिफेंड कर पा लेगा। सेम विद द बिरॉन अपने लेन में हैंडल कर लेगा, इवन इफ लूबू डायरेक्ट काउंटर है ट्रू डैमेज के साथ, बिरॉन इज स्टिल एबल टू सस्टेन लेन पे बिकॉज ऑफ हिज पैसिव। ना शील्ड हीरो को काउंटर कर देगा लूबू भाई, आप देखिएगा अगर बहुत अच्छे से आइटम बायरन बनाते हैं ना, हाँ ट्रेड करना ही नहीं है, बस लेन पे सस्टेन करना है बिकॉज हिज पैसिव गिव्स हिम दैट। सो द प्रॉब्लम इज दैट लूबू इज द बेटर पिक मैचअप में, वो विनिंग लेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिरॉन बस लेन स्टॉल कर देगा बैठ के। अभी वो चीज तो हम मिड टू लेट गेम में देखेंगे जब लूबू का ट्रू डैमेज और साथ काफी हाई मोबिलिटी के साथ में अल्ट में वो एंगेज करेगा। फिलहाल मैच स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, प्रेडिक्शन क्या है बलदूदू, आपको क्या लगता है आईएनटी का ड्राफ्ट ज्यादा बेटर है या आरएनटी ने ज्यादा अच्छा ड्राफ्ट किया है? और ओवरऑल अगर मैं टीम फाइट की बात करूं तो उसमें भी आपकी क्या राय है? ओवरऑल टीम फाइट्स के नाम पे आई वुड से आईएनटीज ड्राफ्ट सिंपली बिकॉज उनका ड्राफ्ट को एग्जीक्यूट करना और आसान है। इट इज मोर इजियर टू सिंक अप बिरॉन और ज़ांगफे के साथ खेलना, जाओ रख के और उसके साथ, क्योंकि उनका सिंक करने की जरूरत नहीं है। बट विद लापू का सेट है, लापू को सिर्फ एक नहीं उसको 2-3 लोगों को पकड़ना होगा क्योंकि उसका सीसी एक ही बार आता है।
एक और उसका स्किप 2 पे, फिर हाया को एग्जैक्ट सही आदमी को पकड़ना है और उसको टाइम ड्रैग करना है और वो ट्रेड को जीतना है, बिल्कुल because बिल्कुल Haya will not be there in the fight. So it is not an easy task for the red side to win this match. मतलब उनका कॉम्प एक अगर चलेगा, एग्जीक्यूट अच्छा किए तो एकदम स्टीम रोल है, बट वही एग्जीक्यूशन बहुत तकलीफ है उनके कॉम्प के साथ, क्योंकि हर प्लेयर का अल्ट परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट शायद एक चीज यहाँ पे हुई है बलदूदू, हम शायद आरएनटी की बात कर रहे हैं जिन्होंने लापू लापू हाया और चिंग लेके रखा है, और जो आईएनटी है उसने ड्राफ्टिंग करी है ब्लू साइड से। अभी आई एम नॉट श्योर, फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन पे जो लाइव स्ट्रीम पे दिख रहा है वो ऐसा है, बट चलो हम देखेंगे कि क्या पिक्स होने वाले हैं। हो सकता है कि हमारी तरफ से दोस्तों मिस्टेक हो जाए कि हम कौन सी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हमें चैट सेक्शन में जरूर बता देना। आईएनटी आरएनटी बहुत क्या? कंफ्यूजन हो रहा है हम लोग के साथ, बट विद दैट एक शॉर्ट पॉज तो हुआ है, बट देखे तो लेन फाइज आई थिंक एडवांटेज गोल्ड फार्म लेन में तो चानो इज गोइंग टू स्ट्रगल अगेंस्ट द लूंग अर्ली गेम में, एटलीस्ट ऑन अ प्योर मैचअप बेसिस। ऑन द अदर साइड सिचुएशन है लूबू का, क्योंकि लूबू का पूरा कंट्रोल रहेगा, वेर एज बिरॉन हैज टू हग द टरेट पूरा गेम, तो उसका वो एक्चुअल एक्टिव रोटेशन रहेगा नहीं, बट एक्टिव रोटेशन रहेगा नहीं, जैसे बहुत कम चांस है गैंग करने का बिरॉन को, क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी लेन हार रहा है, वो ट्रेड तो कर नहीं पाएगा। तो अनलेस वो लेन फ्रीज करके बेट किए तो आई डोंट थिंक बिरॉन इज गोइंग टू बी कॉट आउट। आई एग्री। और सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा एडवांटेज कहीं ना कहीं रेड टीम को भी है, उनके पास बॉम्बो कॉम्बो अच्छा है। जैसे ही लापू लापू का अल्ट और जिंग का अल्ट साथ में कनेक्ट होता है, उसके साथ ही लूबू बैकलाइन पे जंप करेगा, वो एक मोमेंट जरूर होगा जो गेम पलट सकता है, जो कमबैक ला सकता है रेड टीम के लिए। डेफिनेटली वो लूबू का प्ले, अगर वही है, ये तीनों फ्रंटलाइनर का है गेम आरएनटी के साइड से, वो लापू, लूबू और ये हमारा यिंग, अगर इन तीनों का कॉम्बो सही बैठा है, क्योंकि बैकलाइन जो है सिर्फ लूंग के पास एस्केप है और एक दोनों पे फ्लैश है, एंड लापू और दोनों बहुत डिस्टेंस कवर करते हैं अपने फ्लैश के साथ, बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स। तो अगर वो सही टाइम पे बेट कर दिए बैकलाइन को, अगर तुमने बैकलाइन उड़ा दिया लूबू और यिंग उठा के, तो फिर आगे का फ्रंट लाइन कितना टाइम सस्टेन कर पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए बायरन ज्यादा से ज्यादा एक आइटम डैमेज के लिए डालेगा, वो सस्टेन ही जाने वाला है, जैंग पे भी सस्टेन ही करने वाला है। बचा आपके सामने ऊकियो, आविन और साथ में शाओ क्याओ। आप किसी को भी इस खुशी हीरो अगर लूबो उसके ऊपर जंप करता है और आप उसे स्केप नहीं कर पाते हो, तो आप 2 शॉट हो जाओगे, फिर डैमेज लैक करने लगेगा आपका टीम फाइट में, और वही एडवांटेज आ सकता है रेड टीम को। मगर ब्लू टीम, अगर मैं टोटल ओवरऑल की बात करूं, फिलहाल हम मैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अर्ली टू लेट गेम पूरा ही कॉम्प उनका बैलेंस है। एकदम। And with that being said, we are finally back in action. Game 1 of match 2 of the matchday 1 of Crimson Series season 1. With that being said, mid lane पे बहुत rotation coming in. 4 bodies already collapsing onto the mid lane, and they are. I think this match is going to start again, बलदूदू, because आप देखिए 5 मैन ऑलरेडी मिड में आकर के टावर पुश कर रहे हैं और रेड टीम भी उन्हें रोक नहीं रही है। कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई है दोस्तों, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा गुस्साइएगा नहीं, ये काम करिए, थोड़ा सा स्ट्रीम वगैरह को शेयर करिए, तब तक हम जल्दी से मैच स्टार्ट कराते हैं और आपको अपडेट देते हैं। मॉन्क्स भाई, ये स्टार्ट।
seconds left. Welcome to Honor of Kings. Enemy minions will arrive in 5 seconds. Return! All forces, move out! Minggir. Raja langit mau lewat nih. The call of the carnage. Much better. आते हैं हम बैक और मेरा दोस्त बलतूदू भी आ चुका है मेरे साथ में। तो कहाँ पे थे यार? हम ड्राफ्टिंग पे बात कर रहे थे और साथ ही साथ गेम भी स्टार्ट हो चुका है एंड ये रीस्टार्ट हुआ है। ठीक है बलतूदू, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गई थी तो इस वजह से हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया है। बट एक स्पेल पे मैं तुम्हारा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि ज़ेंगफे ने यहाँ पे स्टन ले रखा है। हाँ, वो मैं भी देखने वाला था कि स्टन किस, मतलब तो खेलोगे कहाँ? मे बी ही इज गोइंग इन फॉर द जंप और इंटरप्ट, मे बी लूबू के लिए, ताकि वो इंस्टेंट सीसी से उसका कॉम्बो इंटरप्ट कुछ हो। मे बी द प्लान इज दैट, क्योंकि यिंग और लूबू पूरा कॉम्बो रिलायंट है। मे बी दैट माइट बी द गोल बिहाइंड दैट। बट विद दैट ओके, वहाँ हाया का किडनैप हुआ है, बहुत बढ़िया वाला। जाओ हैज बीन टेकन आउट, but will she be taken down is the question. Yes, it is. First blood picked up. Will they get the reek back? Yes, they get the pack. 3 catches on the ult on the Lubu, and Ying will get the revenge on the Zhangfei right now. They are getting very low. Will they get the death they need? But the trade-off so far is 1 for 2. Flash baited out on the Lapu, and that is all she wrote. पहला टीम फाइट ऑलरेडी अभी 2 मिनट हुए और 3 किल ऑलरेडी गिरा दिए गए। 1 किल मिला है ब्लू टीम को, 2 किल निकाल करके रेड टीम ले जा चुकी है। कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग देख लो भाई, रेड टीम की तरफ से ज्यादा अच्छी आ रही है। आप बता रहे थे कि हाँ ब्लू टीम के इतने इतने फायदे हो सकते हैं, पर देखिए रेड टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। वही तो, इट कुड गो एनीवेयर राइट नाउ। बट विद दैट बीइंग सेड, गेम अभी बस चालू हुआ है, कहीं भी जा सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर मिड लेन पे, जाओ को जगह ही नहीं मिल रहा। ऑन टॉप ऑफ द किडनैप, फोर्स टू यूज अप द अल्टीमेट। उसको लगा था एंगेज आएगा, बट मुझे लगा उससे सिर्फ वेव क्लियर करनी थी शायद, इसलिए फास्ट रोटेशन कर रहा था टॉप लेन के लिए, तो उन्होंने अल्टी यूज कर दिया। बट मिनियन भी एक ही बचा था, तो वेव कौन सा वेव बचा था क्लियर करने? I mean, it wasn't a good situation to find yourself in. But with that being said, on the top side, there's another engage coming in. Force field suppression used up. Lubu ultimate popped up instantly. Zhangfei along with him. Finally, वो petrify cooldown पे है अभी भी, but Ukyo will get the kill. Follow up आया है हमारा लापू से. Haya will also find her way. Biron still sustaining amidst it all. Finally gets kidnapped. Ukyo Tachibana caught very low. Will heal up with a sliver of HP. Yao gets the kill onto the Lubu. Haya stuck amongst 3. And finally will be managing to make her way out of it with a very, very low HP tank. And the scoreboard right now, Ryan, is 3 and 2. यार बायरन को देखा आपने, कितना लो एचपी में क्लच करके गया, उसने पूरा डैमेज सस्टेन किया, उसके बाद में वो 1v1 सस्टेन करके गया है हाया के अगेंस्ट में। मार्वलस प्ले, ये लड़का बहुत ही अच्छा खेला है। इसका नाम लिविंग डेथ है एंड ये वाकई में लिव करके आया, ये मौत को चकमा देके आया है। बिल्कुल। एंड विद दैट बीइंग सेड, मैच एक और एंगेज हो रहा है टायरेंट पे अभी।
You have the Biron already starting up the Tyrant. There's the play coming in. They will be zoning away the members of the blue team very heavily. ZF going in for the re-engage, gets caught out, but who's gonna get the Tyrant? It is the Ying with the smite, catches him on time, uses up the flash, gets the Zhao. It's only the Lubu keeping all the impact the team needs. Biron stuck by himself. They will be poking him out. They will not chase him down as they do not feel the need to do so. अभी mid पे पूरा pressure आने वाला है. 10 सेकंड में वो shield गिरेगा और वो mid turret will be siege down 100%. मैंने आपको बोला था वॉम्बो कॉम्बो इज गोइंग टू चेंज दिस गेम, और वहीं देखने को मिल रहा है. अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और मिड का टावर ऑलरेडी रेड टीम डिस्ट्रॉय कर रही है. 3-4 का स्कोर चल रहा है. अगर मैं गोल्ड लीड की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एक ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी रेड टीम ने सिक्योर कर लिया है, पर जो मैप कंट्रोल है वो ज्यादा अच्छा मुझे रेड टीम की तरफ दिखाई दे रहा है. ब्लू टीम को डिफेंसिव खेलने की जरूरत है. बिल्कुल. ओके, बॉटम लेन की तरफ अगर मैं चलता हूं तो आओगिन अकेले सोलो गेम कर रहे हैं. लापू उनकी थोड़ी फील्डिंग सेट कर सकते हैं, बट वो ऑलरेडी लेवल 7 है तो अल्ट टका करके जा सकते हैं. थोड़ा बहुत पोकिंग चल रहा है. लापू ने अपना अल्टी यूज कर दिया है. लगातार वो अपना एक्सपोनेंस डालने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली अपना अल्टीमेट लगा करके भागने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे अगर लापू अब इनिशिएट करते तो ज्यादा अच्छा होता, पर बैकअप आ चुका है बल्लूडू. Finally बैकअप आया है. फाइट चल रहा है अभी भी. They do not have the damage output. Ying with a beautiful engage. Once again, Zhao a little too aggressive to be playing like that. Mage की जगह tank जैसा rotation हो रहा है वहाँ उस side पे. She gets caught out for the 3rd time this game. But they do get a clap back. Ao Yin will find out the Chano, but they instead end up trading their lives. फिर से engage आ रहा है. ZF uses up the ult disengage करने के लिए. एंड द स्कोरबोर्ड धीरे धीरे से शिफ्ट हो रहा है पूरा रेड टीम के फेवर में. यार मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रेड टीम अपना गुस्सा निकाल रही है. देख रहे हो किस तरीके से ब्रॉल चल रहा है एकदम इस मैच के अंदर. बिल्कुल तबाही मचा के रखी है. हालांकि क्लास लेन को टॉप लेन करना चाहिए, बट वो अभी बॉट आ चुका है और बॉट लेन जा रही है टॉप लेन की तरफ में. बिल्कुल ताड़म तोड़ एकदम तबाही मचा करके रखा हुआ है रेड टीम ने. बिल्कुल. एंड द मेजर इशू इज कि ब्लू टीम ने उनको टेम्पो दिया. वो पहले फर्स्ट ब्लड के बाद इतना खुला छूट मिला है हाया और लापू को रोटेट करने के लिए कि वो अभी दे प्लेइंग. इट्स टू अनसेफ फॉर जाओ टू अभी रोटेट. किसी कोई भी रोटेट नहीं कर पा रहा ठीक से, और वो रोटेशन स्लो होने की वजह से और उनका टेम्पो खराब हो रहा है. एंड इट्स बिकम अ वेरी वियर्ड विशियस साइकिल फॉर द प्लेयर्स ऑफ द ब्लू टीम, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आओई के अगेंस्ट में यार मुझे नहीं लगता कि लूबू ज्यादा अच्छा रहेगा. और फिर से आप देखिए एक और रोटेशन 4-man गैंग मुझे टॉप लेन की तरफ दिख रहा है. क्या इस बार बायरन सरवाइव करेगा ये गैंग? एंड वापस बिरॉन फोर्स टू डिसएंगेज. वो लूबू देखिए बैक ऑफ. लूबू अकेला इज होल्डिंग बैक द ZF एंड द बिरॉन. ये इश्यू होता है अगर जल्दी पिक होता है तुम्हारा क्लैश और रोमर दोनों टैंकी. Always see Lubu pick. Once again, Lubu in the heart of 3 players will catch them out. Once again, the mage got down very low. Will Zhao escape with a life? Yes, she does. Biron with a miracle save to keep his mage alive. But things are not looking good right now. लत हो सकता है यहाँ पे. शायद भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. दौड़ा के रखा हुआ है. किलिंग स्प्री पे ओक्यू ताचिवाना जा चुके हैं. हाया की बहुत लो एचपी है. उनको टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं आओइन. एसू से कनेक्ट करेंगे. किल मिल गया हाया का. डबल किल पे जा चुके हैं. ओक्यू ताचिवाना डिफीट कर दिया है सीधे सीधे जिंग ने, और आओइन ने डिफीट किया है चानो को. लो एचपी में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिंग, लेकिन शायद कनेक्ट नहीं होगा S1. इसी जगह पे ओवरलॉर्ड निकालने की पूरी कोशिश कर सकती है टीम. And finally comeback मिला है ब्लू साइड को. And the only mistake that these guys made was the red side made कि वो बहुत ज्यादा टाइम रह गए. बिल्कुल. इशू क्या है, उनका पूरा कॉम्बो पे डिपेंडेंट है, और उन्होंने देख लिया कि जाओ पे उन्होंने फ्लिकर यूज किया है. लूबू का अल्ट खत्म है, यिंग का अल्ट खत्म है, और लापू का है. तो जब कुछ बचा नहीं है तो डरने का क्या बात. बचा था वहां पे. चानो के पास में एडवांटेज था, बट वो वॉल ही नहीं क्रॉस कर पाए. वो अपना S1 ही नहीं दबाया कि वो वहां पे टीम फाइट में आ सके. वो जोन आउट हो गए वहां से, इसलिए टीम वहां पे डैमेज लैक कर गई. और जिंग यहाँ पे टायरेंट को सिक्योर कर चुकी है. जिंग Finally they do get the tyrant, and the overlord still up, but I do not think either side is going to be able to trade for it right now. They still want to play the rotation on the bot side. Both the gold laners so far
still somewhat comfortable in their thing, but definitely the Aoyin is a lot more comfortable looking at his gold. 2, 1 and 2 for the KDA, 2 items already made, and he's moving well on to the Overlord's Might. But with that being said, ZF coming with the engage, will tank up Ying's ult, will eat up the passive completely. Lubu going into the set, instantly destroyed the Zhangfei. He also gets the shutdown on the Ukyo, and Lung forced to escape with the dragon as he gets hunted down by the Ying. Red team has आई डोंट नो बायरन अब क्यों जा करके घुसा था, वो डेफिनेटली अपना जबरदस्ती का किल लेकर के आया है। पर यार जब ये फाइट स्टार्ट होती है ना तो ब्लू टीम बड़े जोश में आती है और उसके बाद में रेड टीम उन्हें उनकी कह लीजिए आप औकात दिखा देती कि बेटा ये फाइट नहीं जीतने वाले तुम, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा अच्छा बॉम्बो कॉम्बो है, हमारे पास में 2000 की गोल्ड लीड भी ज्यादा हो गई है। Definitely, and with that being said, there is another engage they will be looking for. No, not yet. They're just going to take the enhanced tyrant right now. Rather than going for the push pressure, उनको पता है कि as long as they commit one lane with 5 bodies, blue side will not be able to reply. So they instead go for the damage buff from the tyrant, as their team right now is still lacking a little in the DPS, क्योंकि चानो का अभी पूरा gold items बने नहीं है। अगर उसका तीसरा आइटम अभी आ जाए तो he will be able to stay in the fight longer and more effectively. बिल्कुल सही कहा आपने। और EXP और गोल्ड को ही ज्यादा फोकस करके चल रही है टीम रेड। हालांकि इनहांस हो जाते दोनों ऑब्जेक्टिव, आपको ज्यादा प्रेशर देने के लिए ओवरलॉर्ड ज्यादा अच्छा रहता है, पर टायरेंट को ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपको EXP चाहिए और गोल्ड चाहिए। एक छोटी सी फाइट मुझे देखने को मिल सकती है, आओइन अपना स्किल वगैरह यूज करे, पर उनके पास में मैना नहीं है और अल्टी ऑलरेडी यूज हो गया है। Cool. And with that being said, there is another engage. Chano will be collapsing the turret and the killing spree onto the Loom. He did not have the ultimate and he will pay the price for it. But a beautiful petrify catching 4. But what is the point? The stun is only for a brief moment. It is not enough to stop the juggernaut that the Ying is right now, and they will collapse the turret. While on bottom side, लॉयड फ्रंटेरा एक टर्रेट उठा लिए बॉट लेन पे सोलो, बट तब तक उनका बेस बचेगा नहीं क्योंकि उनका रिकॉल को इंटरप्ट हुआ नहीं, बट वो गेम ही खत्म कर दिए तब तक। यार मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, रेड टीम ने पूरा वॉम्बो कॉम्बो पे गेम खेला। वो कहीं भी रोटेट कर रहे थे ना तो चारों एक लेन में जा रहे थे, चाहे उन्हें बॉट जाना हो चाहे उन्हें टॉप जाना हो। वो कोई भी टीम फाइट इनिशिएट कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे अपनी अपनी बारी का। उन्हें पता था कि सबसे पहले लूबू का अल्ट जाएगा, लापू का अल्ट जाएगा, उसके बाद में हम इनिशिएट करेंगे। तो ये एक प्रॉपर सिनर्जी कहीं ना कहीं उन्हें ये गेम इजिली जिता करके लेके गई है। वही तो बहुत इश्यू है अभी जिस तरीके से इनका चल रहा है गेम। आई डू नॉट थिंक दैट INT विल गेट अ कमबैक इफ दे कीप प्लेइंग टू द टेम्पो ऑफ देयर अपोनेंट्स, क्योंकि बाय प्लेइंग टू द टेम्पो ऑफ द रेड साइड, मैं वही बोला था कि रेड टीम का ड्राफ्ट अच्छा है बट उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत तकलीफ होगा अगर ब्लू टीम थोड़ा सा शांत से खेले। बट उन्होंने फर्स्ट ब्लड देने के बाद वही गलती बार बार रिपीट किया, एंड कोई भी टीम उतने चांसेस देता नहीं है। फिर भी हैट्स ऑफ टू उकियो ताचिबाना's गट। उन्हें लगा कि शायद कमबैक हो सकता है, मैं अगर टावर पे जाकर के पुश करूंगा तो शायद हो सकता है रेड टीम बैक करेगी आकर के, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं जाकर के यिंग उसको डिफेंड कर लेगी और हम बेस को फिनिश कर देंगे। सो पहला स्कोर जाता है आई थिंक RNT की तरफ, सॉरी INT की तरफ। INT रेड है। I am kind of confused myself, but yeah. Yep. So INT will be taking the first point of this match, of this series between the two, and they have secured match point. Now the target for their opponents is to get that comeback or go home. यार मुझे डेफिनेटली लूबू बैन तो दिखने वाला है नेक्स्ट गेम के अंदर। जिस तरीके से उसने अपने अल्ट लगाए हैं ना, मार्वेलस चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दी है उसने। उसे एग्जैक्टली पता था कि कब उसे टाइम ऑफ करना है अपना अल्ट और बैकलाइन पे किस टाइम पे कूद करके मुझे उड़ा देना है। वो जाता था शौकियों को 2 हिट्स में ही उड़ा देता था और मजबूर कर देता था आओइन को कि आप टीम फाइट से दूर रहिए, अल्ट लगाइए और यहाँ से भाग लीजिए। Exactly. And with that being said, the match, we will be going in for a short break before we start the next match between the two. Don't go anywhere, folks. Share the stream, interact with the channel, join the DC, and we will be back in just a few moments.
मॉन्क्स भाई आपका डिस्कॉर्ड ही लगा हुआ था स्ट्रीम पे, हमने मोबाइल से ही देख के कास्ट किया है। मैंने तो मोबाइल से ही देख के कास्ट किया है। हाँ सेम। स्टार्ट कर दूं? ओके सो वेलकम बैक गाइस। आ चुके हम दूसरे मैच में, जहां पे पहला मैच निकाल करके आईएनटी गई है और आरएनटी को अब कम बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला मैच हार गए तो आप टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएंगे। मेरे साथ में बलदूदू, आप क्या प्रिडिक्शन करेंगे? चलिए उनसे पूछते हैं। अभी देखते हुए तो ये गेम 1 के बाद आई फील दैट आईएनटी जस्ट माइट स्वीप बेस्ड ऑन हाउ वेल दे डिक्टेड द टेम्पो भाई, क्योंकि वो गेम देखने के बाद मैं तो फिदा हो गया था उनका रोटेशन का देख। देखो भाई, रेस्पेक्ट बैन तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आईएनटी ने अपना ही पिक बैन कर दिया, उन्होंने हाया बैन कर दी है। टॉलिया बैन भी, ओके, बैक टू बैक बैन देखने को मिले। और आयोइन को बैन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था आरएनटी को भी कि आयोइन एक अच्छा कॉम्पिटिटिव हीरो हो सकता है, और अर्ली भी बैन देखने को मिली है। ये सेम बैन देखने को मिला है मुझे दोबारा से। बिल्कुल, इट्स नॉट इजी टू गेट दिस पिक। ओह माय गॉड, क्या ये वही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? इट इज द फर्स्ट पिक पे, कंप्लीट फर्स्ट पिक पे। once again no jungle, opposing jungle has been banned. वापस पे पिक हुआ है, एकदम ऑरा फार्म तो हो रहा है वापस ये मैच में। एंड इट्स अ वेरी risky one because मैच पॉइंट तो ले लिया इन्होंने, बट मैच पॉइंट के साथ ये गेम जीत के भी सीरीज खत्म कर सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी रिस्की प्ले और अ वेरी कॉन्फिडेंट वन। ईदर वे आई लाइक इट। बिल्कुल ललकार रहे हैं सामने वाले अपोनेंट को। देखो मैं पे पिक कर लिया हूं, उठाओ काउंटर, देख लूंगा मैं, आ जाओ मेरे सामने। बट हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं, क्योंकि एटीआर जरूर जीत गई थी, बट आरएनटी अभी आपसे हारी है, तो हो सकता है आपको एक अच्छी टक्कर दे सकती है। डॉक्टर बायन मुझे पिक देखने को मिल रहा है, जो कि मेज की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक इन्हें लियांग जैसे हीरो या फिर डोंगहोंग को लॉक करना चाहिए था, और साथ ही साथ प्रिंसेस फ्रॉस्ट पिक हो गई है आईएनटी की तरफ से। Exactly. Zhang Fei again. F and the ZF combo, Zhang Fei और Wang Zhaojun along with a Pei, एक पूरा all-rounded draft हो गया इनके साइड से। But the other side has not exposed their jungle pick अभी तक। उन्होंने मायन तो हटा दिया है clash lane में। They want to ensure that he gets as much space as possible to deal the damage.
यार इनका जो फर्स्ट पिक है आरएनटी का वो यूहान है, और साथ ही साथ में बैन देखने को मिला है। ऑग्रान को किया है, लेडीसन को अगेन बैन कर दिया है। लेडीसन और अर्ली इनके टारगेट में रहते हैं, ये हमें पता चल चुका है। ब्लू टीम को एक लास्ट बैन करना है। बलदूदू क्या लग रहा है आपको, क्या बैन कर सकते हैं वो? थिंक मेन फोकस जो इनको रखना है अभी ब्लू साइड को, कि उनको निकालना है अपोजिंग जंगलर्स, क्योंकि सिर्फ वही बचे हैं अभी। ऑग्रन तो हटा दिया है, विच वाज अ रियली गुड रिस्पॉन्स टू द पे। तो बचा है, यू हैव समथिंग। ओके, दे गो इन फॉर द मैंकी बैन। मेरे को लगा था दे माइट बी गोइंग इन फॉर समथिंग लाइक एन अगुडो, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव द डॉक्टर बियान यूहान फॉर स्पेस, एंड दे कुड पेयर इट अप विद सम अदर काइंड ऑफ अगुडो ऑन अ टैंक बिल्ड या कोई और टैंक जंगल। And right now, Lloyd is hovering on the Flowborn tank right now. यहाँ और आप कॉम्प देखिए, डॉक्टर बायन, इट कुड वर्क, डॉक्टर बायन आपको हील देता रहेगा लगातार, आप इतना ज्यादा सस्टेन करेंगे ये बिल्ड का, क्योंकि पे के सामने टैंक जंगल उठाना is normally a very bad decision, because by the time your tank jungle will be clearing his one buff, your entire jungle will get cleaned out, because Flowborn tank personally does rotate quite slow, and she also farms on the slower end until she gets her ult and 2 cooldown abilities. So how do you think they'll respond to the invade? Because उनका कुछ crowd control है नहीं अभी इनके साइड से, एक युवान का skill 2 छोड़ के। And if they actually pick up that, they actually picked up the Hui. There is almost no proper crowd control apart from the Flowborn. जब आपको याद है आरएनटी का जब पहला गेम हो रहा था ना, मैंने आपको क्या बोला था, हुई पिक हो सकता है जैसी ड्राफ्टिंग जा रही है। आई वाज राइट। एंड अगेन धर्मा पिक हो चुका है, डीरेंजी पिक हो चुका है, क्योंकि सामने इतना गंदा सीसी है ना कि आपको प्रोबॉन हिलने ही नहीं देगा। तो आई थिंक डीरेंजी काफी अच्छा पिक किया है। कहीं ना कहीं मुझे माइंडसेट समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल के पास में बेटर एक्सपीरियंस है ड्राफ्टिंग का, टूर्नामेंट्स का और गेम का। बिल्कुल। And with that being said, let's see what the game will turn out to be, because a very standard draft coming in from the blue side that RNT has picked up for themselves, but INT this time being on the INT this time has gone in for something new altogether. और साथ ही साथ ये मुझे सबसे बढ़िया बात ये है कि इनिशिएट वाला इस बार बहुत ज्यादा उन्होंने डिपेंडेंट कॉम्प नहीं रखा है कि नहीं हम जब जैसे आपने पिछला वाला मैच देखा था कि लापू जाएगा, उसके बाद में लूबू करेगा, फिर जिंक्स, और उसके बाद में हम डैमेज के आ जाएंगे, वैसा नहीं है। हालांकि आप देखूंगा कि पे किस तरीके का जंगल करता है, क्योंकि वो एक टेम्पो जंगल के अंदर आता है। अगर वो फास्ट फार्म क्लियर करके उसको किल्स नहीं मिलेंगे, उसका फार्म नहीं मिलेगा, तो वो भी लैक करना स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा बहुत हेल्प फ्लोबॉर्न की, उसके मेजेस और उसका सपोर्ट जरूर करें, वरना जैसा आपने बोला था जंगल स्लो बहुत ज्यादा है फ्लोबॉर्न टैंक का एज कंपेयर टू पे। बिल्कुल। एंड लुकिंग एट द सिचुएशन सो फार, we have to see that already पे का इन्वेट शुरू हो गया है, but the response has been read very well by the Flowborn tank. They knew that the buff is most likely उस पे विजन रहेगा, तो पे try to be sneaky and go for those crabs, but instead वो भी उसको मिल नहीं पाया था। बिल्कुल, वो मिड का फार्म लेकर के अब डायरेक्ट रेड से स्टार्ट करेंगे और ब्लू जा करके टॉप लेन की तरफ में गैंग करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं फ्लोबॉर्न टैंक की, तो उनका अभी बहुत अच्छे सिंक से चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से उनको मेज भी हेल्प कर रहा है क्लियर आउट करने में, जो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा एज जरूर देगा इस टाइम पे से टो टू टो करने में। बिल्कुल। एंड नाउ लुकिंग एट द सिचुएशन, बॉट लेन पे होई एक्चुअली बहुत अच्छा लेन कर पा रहा है अपना। ही इज होल्डिंग ऑन अगेंस्ट द डीरेंजी वेरी वेरी वेल। एंड इन द मिड लेन, आई मीन ये गेम का प्रॉब्लम क्या है, इस इशू याद होगा इस मैच में, इज द फैक्ट दैट पूरा गेम का टेम्पो टीम फाइट्स पे डिसाइड होगा, बिकॉज पिक ऑफ पोटेंशियल बहुत कम है। डियान कैन सस्टेन एन एस्केप, यू हैव योर युकुआन, उसको पकड़ना ही मुश्किल रहता है। And the same with Fatih. All of these are very mobile heroes, and even these guys उनका CC है नहीं, तो they can't guarantee a pick against their opponents. So we'll have to see only team fights. Maybe we might be seeing a good setup unless Dharma has something else to say. अगेन मैं देख रहा हूँ कि जो टीम रेड है वो किस तरीके से आप देखिए ग्रुप में रोटेट कर रही है, और एक मुझे छोटी सी टीम फाइट देखने को मिल सकती है जो शायद एक क्रीप की वजह से स्टार्ट हो सकती थी, बट बैक आउट कर लिए टाइम पे उन्होंने अपना क्रीप जो है सिक्योर किया। टॉप लेन की अगर मैं बात करूं तो फती वर्सेस धर्मा में आपका क्या ओपिनियन है, कौन मैचअप जीत सकता है?
ओके, मिड लेन पे फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट ब्लड फाइनली फ्लोबॉन का किल उठा लिया है प्रिंसेस फ्रॉस्ट ने और किसी तरीके से जान बचा के डीरेंजी भागे वहां से। Once again, DjMonks will escape with a sliver of his HP, will go back. But looking at the situation right now, top lane pe, there is a huge invade coming up, 4 bodies, and it is not going to be enough for Flowborn and team to reply in time. Flowborn is nowhere to be found. Dharma will completely clean up the Dr. Bian. They take the objective and a kill to go with it. And the scoreboard abhi 2-0 पे आ गया है. तुमको क्या लग रहा है रायन? Can they drag this game on until Hoi becomes viable? यार मुझे लगता है अगर ये गेम मिड टू लेट गेम जाता है तो डेफिनेटली रेड टीम शायद कमबैक कर पाएगी, बट जो इन्वेडिंग स्ट्रैटेजी अभी इन्होंने स्टार्ट करी है रेड टीम ने, वो कहीं ना कहीं एज तो दे रही है। आप देखिए किस तरीके से वो गए, उन्होंने इन्वेड किया और फ्लोबॉन को फार्म ही नहीं करने दिया। अभी ब्लू पे भी मुझे कैंक आता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस इन्वेड आ रहा है ब्लू पे and they have no response. वापस they got invaded. Huge catch by ZF. They get the freeze. They get the set. By the Dharma. Clean it up as the IL on bot lane has been struck out. 3 bodies down. It's only the Fatih on top and the Hoi left standing. They're trying to siege down mid. Fatih uses up the teleport to go into the mid lane and hold on for now. नाइस अल्ट बाय धर्मा, फ्लिकर अल्ट करके जो उन्होंने दीवार में इतना अच्छा सिक्योर किया, मजा आ गया देख करके। बॉटम लेन की अगर मैं बात करूं तो अच्छा पुश करके रखा है प्रिंसेस फ्रॉस्ट ने भी, और होई को मजबूर कर रहे हैं कि नहीं करने देंगे फार्म, और डीरेंजी को फाइनली उनका किल भी मिल चुका है। 4 सेकंड में दोनों ही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। And right now there is the objectives are up. Pei is going to take up this very quickly. No effort at all coming in from his side. So looking at what they need to do now is वो turrets को उठाना है. Already bot lane has been pushed. बस top बचा है and top will go the second mid lane gets pushed. यार ये गेम तो कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रही है। अगेन फिर से ब्लू टीम, आप देखिए 4 मिनट हुए, बॉटम को ऑलरेडी पुश कर चुके हैं और दूसरा टावर भी पुश कर दिया है। मिड लेन पे फती किसी तरीके से डिपेंड कर रहे हैं, जैंग पे पीछे से आने की कोशिश कर रहे थे कि शायद हमें कोई पिक ऑफ मिल सकता है। बॉटम में अभी भी कोई नहीं गया हुआ है, वो भी टावर पुश होकर के ऑलमोस्ट टूटने ही वाला है। And वापस देख रहे हैं बॉट लेन पे पूरा बॉट लेन has been cleared. सिर्फ इनहिबिटर वन साइडेड फिनिश होगा क्या ये? हाँ, they don't have, that's the problem. उन्होंने अर्ली गेम में ना कुछ सीसी लिया है, ना कोई अर्ली गेम डैमेज वाला बंदा उठाया है। डॉक्टर बियन का डैमेज आता है बट उसके डैमेज आने तक 2 मिनट लग जाते हैं। एंड बाय दैट लुक एट दैट, they've again completely destroyed the Yuan. No response will be given once again, as Lloyd was not going to be enough to let his team stand against all that damage. You can't stop a Zhangfei and a Dharma with just a Flowborn, and we're seeing the results of that. 7,000, 8,000 gold finish होगा। This is not even minute 6 as we're getting the clean sweep by this team. A brilliant performance once again. आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम INT। बहुत ही अच्छा वो अपना सिनर्जी रखते हैं किसी भी टीम फाइट के अंदर। ड्राफ्टिंग उनकी एकदम धमाकेदार और कमाल की होती है। उन्हें पता होता है कि किस तरीके से उन्हें रोटेट करना है, कब इनिशिएट करना है, और 4 मैन रोटेशन जो मैं उनका देख रहा हूं ना, वो लाजवाब है, काबिले तारीफ है। इतनी जल्दी गेम फिनिश करना इजी नहीं होता, क्योंकि आपके सामने वाले अपोनेंट भी काफी अच्छे स्टार वाले थे, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट आप देखिए स्कोर चार्ट्स देखिए बलदूदू, CCBC ऐसे आया हुआ है। वही तो जीरो किल, मतलब कोई भी किल नहीं लेने दिया, इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। Madness. I can only call it that. It's madness. Absolute madness coming in from this side. It is a galore of S's and a no-show coming in from their opponents. They got dismantled from the draft itself और गेम वहीं खत्म हो गया था। फ्लोबॉर्न 2% डैमेज, जो मैंने शायद नहीं देखा है अभी तक। 2% इज वेरी लो, बट कहीं ना कहीं ब्लू टीम ने बहुत अच्छा इन्वेट किया था। हालांकि रेड टीम उनको हेल्प आउट जरूर कर रही थी। यूहान ने उनका ब्लू रेडी रखा था कि जैसे ही वो पूरा कैंप क्लियर करके आएंगे तो तुरंत ही उसकी HP लो थी, वो आराम से ले सकते थे ब्लू। बट स्लो पुशिंग थी, जो आप बोल रहे थे ना, डॉक्टर बायन आपको हील कर सकता है, सब चीजें हैं। मिड टू लेट गेम में ये ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, वो वैल्यू वहां से आता है, बट उन्होंने अर्ली गेम का कुछ इंश्योरेंस रखा ही नहीं। जी।
And ओके दोस्तों, तो ये हो गया है मैच 2। अभी हम बढ़ेंगे मैच 3 की तरफ में, और ये चल रही है क्रिम्सन सीरीज सीजन 1 इन कोलैबोरेशन विद 4K Monks एंड नाइट वुल्व्स ई स्पोर्ट्स। बता Thank you so much for watching, guys. I will see you guys in the next one. This was for today's session. Today, 2 games we were supposed to play and we finished the both of them. We will be continuing tomorrow for the Crimson series S1. Hope you guys enjoyed today's session. Please, Bhulchuk Maaf, don't curse in the chat. I hope you guys enjoyed today. And tomorrow will be better. And we might see it on Twilight session, Twilight stream. We will be sharing it on the Discord. Come and check us out there on the HOK India Discord. And I will see you guys in the next one. Thank you so much. Good night. Bye bye. Take care.